Hello friends, good afternoon. Today is 23rd of January 2024. ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क, व्हाट इज हैपनिंग। आप लोग अवेयर होंगे कि रेड सी में कभी हाउथी रेबल्स का न्यूज आ रहा है, कभी ईरान का न्यूज आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट शिपिंग चैनल पे आप सुन रहे हैं कुछ तो चल रहा है। तो ये कुछ क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो ये जो चीज है, ये एनालिसिस है कि दो टाइप ऑफ एनालिसिस कैन बी डन। दो तरीके से किया जा सकता है कि एक में हम लोग सेंटिमेंट एनालाइज कर सकते हैं कि न्यूज देखे, खबर देखे, उसके बारे में पढ़े, और हम लोग दूसरा और एक तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं हार्ड डेटा को देख के। सो ये जो एनालिसिस है वो हम लोग हार्ड डेटा वाला एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द हार्ड एविडेंशियल डेटा एंड सी व्हाट इट्स सिग्नलिंग. So I will go to my favorite macro website, that is the EN Macro Micro. It's an awesome website जो fundamental के लिए and they have done amazing work. Taiwan से हैं वो लोग, and they have really added so many world-class analytical tools. Already ready-made analysis available on the global macro side. That's, if I can't, it's simply just awesome. और मोर ओवर सिंस दे आर फ्रॉम एशिया, दे वो लोग समझते हैं कि लोअर कॉस्ट, so they have kept their cost very very low. सो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे लेट्स कुछ न्यूज। उसमें फर्स्ट विल गो टू ये मैक्रो माइक्रो का अंडर ट्रेडर्स इनसाइट, चार्ट्स के अंदर आता है ट्रेडर्स इनसाइट। उसमें मैं इंडस्ट्रीज पे आया हूँ और अंडर इंडस्ट्रीज आई एम इन द शिपिंग इंडस्ट्री। मैं शिपिंग इंडस्ट्री का डिटेल्स देख रहा हूँ। शिपिंग इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो पहले चीजों को समझने के लिए। दे आर लाइक वेन, खून जैसा रहता है ना बॉडी में, अपना वेन जैसा। सो दीज वेन्स आर लाइक दिस शिपिंग चैनल्स, दे कंटिन्यू गिव अर्ली सिग्नल्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, देखिए चाइना। चाइना इज अ मेजर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। सो देर आर एक्सपोर्ट्स वहां से कई जगह जाते हैं। इंडिया तो आता ही है, उसके हम लोगों को बिगेस्ट डेफिसिट चाइना के साथ है, बट दैट्स अनदर स्टोरी। बट चाइना से चारों तरफ, बीट अफ्रीका, बीट इंडिया, बीट अमेरिका, बीट यूरोप, चारों तरफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर ट्रेवलिंग। और चाइना में कैसे वो ट्रैवल कर रहा है? थ्रू शिपिंग चैनल, थ्रू शिप फ्रेट इंडेक्स के जरा। एंड दैट फ्रेट कॉस्ट इज सिग्निफिकेंटली गोइंग अप। देखिए चाइना कॉन्टेनराइज फ्रेट कॉस्ट एंड शंघाई से सिग्निफिकेंटली मेजर जो रूट्स है शंघाई से टुवर्ड्स यूरोप, उनका कॉस्ट स्टेडीली बढ़ रहा है। देखिए चाइना ग्लोबल एक्सपोर्ट कंटेनर इंडेक्स या ड्रूअरी वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स, उकन देखिए शंघाई टू जिनोवा, न्यूयॉर्क, शंघाई टू न्यूयॉर्क मैंने हटा दिया। और लेट मी रिमूव द रॉटरडैम टू शंघाई, मीन्स यूरोप से चाइना आने का, न्यूयॉर्क टू रॉटरडैम। Then this is the one. So now let's make it 3. We can clearly see the shipping cost is going up. This is Europe to New York, not important. This is the way it's happening. It's not related that route. बट वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स से क्लियरली दिख रहा है कंटेनर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, और दैट इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट गोइंग अप। चाइना से अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस देखा जाए पास्ट 3 इयर्स, जो बिगेस्ट राइज दिख रहा है जिस रूट में, दैट इज मेडिटेरेनियन सर्विस, दैट इज इन यूरोप, directly related to Red Sea channel. Then we have Auric Europe service, yellow. That is also another next one is up. Gulf Red Sea service.
थर्ड वन टॉप। सो एक बड़ी sorry, particular route I can see significantly cost increase is happening, and that is because of the geopolitical channel. यहाँ पे आइए, नेक्स्ट जो डेटा हम लोग देखने जाएंगे वो है वर्ल्ड सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स, विच इज ऑलरेडी ऑन द राइज। ये मंथली इंडेक्स है, वंस अगेन फिर से रिलीज होगा फॉर द जनवरी डेटा सून। बट दिस कॉस्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स इज गोइंग अप। इसके साथ साथ मैं ये भी रेट रूट, देखिए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से डेटा आ रहा है, सो डाउट करने का कोई है नहीं। बिकॉज ऑफ ईरान, ये स्ट्रेट ऑफ हरमाज। तो चलिए अब चलते हैं स्ट्रेट ऑफ हमाज से। स्ट्रेट ऑफ हमाज हम लोगों को लेके जा रहा है यहाँ पे ये चैनल। So Qatar, Bahrain, even Kuwait, Iraq, from here, the sea coast, जो crude oil है, it has to pass this small area known as Strait of Hormuz. And Iran has its significant naval presence, or you can say has some advantage over this area. So this particular area, particular bend, it is extremely vulnerable to global and important shipping channel. Global, you can say about, I think, 20 to 30% of the seaborne crude passes through these region. I'll have to check the latest number, not fully sure on this one, but this is a very, very important channel. So the trouble is brewing. Sometimes Iran is taking control some of the ship, as well as if you look at the Red Sea, this is the Red Sea. यहाँ पे भी ट्रबल चल रहा है with the Houthi rebels, which are deliberately attacking US and UK ships. So this is more of a provocation. तो अब चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे, जो बिकॉज ऑफ इरानियन प्रेजेंस फ्रॉम सितंबर वी हैव सीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ यूज ऑफ दैट शिपिंग चैनल। shipping channel में volume and number of ships has significantly dropped to the lowest level since almost 2020, or exactly during the COVID period. So up to that level we have seen decline. ये decline यहाँ तक आ चुका है। फिर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल, चलिए चलते हैं सुएज कैनाल पे। दुनिया का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैनल जहां से मेजॉरिटी ऑफ द शिप्स को पास करना पड़ता है, दिस इज द सुएज कैनाल। इजीली वो लोग इससे पास करके मेडिटेरेनियन सी पे पहुंच सकते हैं, जहां से फुल यूरोप, तुर्की, ऑल these are ports. There are very important ports built based on these channel. This is an channel, ये बताया गया था कोई भी मेजर क्राइसिस हो, इवेंट ड्यूरिंग वॉर, दिस चैनल विल नॉट बी डिस्टर्ब। बट करंटली ट्रबल जो चल रहा है रेड सी पे, और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को हार्ड डेटा में दिख रहा है। आइए, सुएज कैनाल से नंबर ऑफ शिप्स जो पास कर रहे हैं, उनका 7 डे का मूविंग एवरेज इज अलार्मिंग। इट हैज डिक्लाइंड शार्पली फ्रॉम डिसम्बर से। ड्यूरिंग डिसम्बर around 81 number of average 80 plus ships was passing through this channel, and that number has now dropped to 46, closest to the level during COVID-19 or previous जो saga हुआ था regarding the channel शिप स्टॉक इन द चैनल। एक चैनल पे जो शिप स्टॉक हो गया था प्रीवियस इंसिडेंट पे, उसके अलावा दिस काइंड ऑफ मूवमेंट वी हैव नॉट सीन। एक्चुअली अगर लॉन्ग टर्म एवरेज देखा जाए तो एक्चुअली सुएज कैनाल से वॉल्यूम हैज गॉन अप, वॉल्यूम बढ़ा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिपिंग चैनल, एंड वहां से दिस टाइप ऑफ ड्रॉप वी आर सीइंग। अगर ये दो चैनल बंद हो जा रहा है, if these two channels are done, then the ships जो अभी कर रहे हैं, they are going through this area and passing through
दिस कंप्लीट जोन टू गो टू यूरोप। पूरा यूरोप में जाने के लिए ये पूरा घूम के जाना पड़ रहा है, वेर एज द मेडिटेरेनियन सी इज नाउ आउट ऑफ, ये इजी access to Mediterranean Sea is now no longer possible. सेम चीज देखते हैं बब एल मंडेब स्ट्रेट, ये भी और एक वेरी इंपॉर्टेंट शिपिंग चैनल है। वहां के 7 दिन का मूविंग एवरेज देखिए, ए मेजर ड्रॉप जब से ईरानियन नेवल एक्टिविटी वहां पे बढ़ गया है, वेर दे हैव कैप्चर्ड कॉमर्शियल शिप्स। दिस इज द बब एल मंडेब चैनल। This is where the Houthi rebels are also operating. Gulf of Aden is this. So this is where Bab el Mandeb Strait is there, and यहाँ से भी ये जो छोटा स्ट्रेट है, यहाँ से नंबर ऑफ शिप्स जो पास करते हैं दैट हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड। ये क्लियरली दिख रहा है कि वहां पे क्रैश हो रहा है। तो ईरान एंड हाउथी रेबल्स दोनों का जॉइंट प्रेजेंस वो इंक्रीज जियोपॉलिटिकल रिस्क। ships have now have to travel much longer routes, that cost is going to sip in to यूरोप। ये जो यूरोप में स्टैगफ्लेशन चल रहा है ये और भी बढ़ जाएगा, एंड यूरोपियन इन्फ्लेशन में भी इसको ज्यादा, और another round of impact is going to happen on the European inflation. This is inflation positive, this is interest rate positive, and bond, this is especially long term interest rate positive। ये जो एरिया पे सिग्निफिकेंट ट्रबल चालू हुआ है, दिस हैज सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट as Asia, like Asia, this area becomes very difficult to access by Europe compared to when these channels were less had less geopolitical risk। और भी मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, दिस इज द पनामा कैनल। पनामा कैनल और एक इंपॉर्टेंट चैनल है एंड इट इज क्लियरली गोइंग डाउन। तो चलिए पनामा कैनल भी देखेंगे। So this is another decline here from the, possibly this is not regarding the geopolitical issue of this Panama Canal, whereas we are talking about these two very important issues। But यहाँ पे जो चीज मैंने पनामा कैनाल से अलावा जो चीज मैंने दिखाना चाहता था is this one, is Cape of Good Hope। Let's search जो Cape of Good Hope, और शिप्स जो दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं, शिप्स अब जो दूर दूर से ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है, दिस यू कैन सी क्लियरली द केप ऑफ गुड होप। ये जो शिप्स यहां से नहीं अब पास कर रहे हैं, दे आर नाउ पासिंग थ्रू दिस एरिया केप ऑफ गुड होप, एंड दे आर फाइनलिंग। यही वो रूट है पॉसिबली जिससे वास्को डा गामा फाइनली आए थे इंडिया, केप ऑफ गुड होप। और लास्ट जो पॉइंट मैं ये इसमें हाईलाइट करना चाहता हूं कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स दिखाना चाहता हूं। और कई बार इंडेक्स ऊपर जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर जो है जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स दिस इज मेजर्ड बाय फेड इकोनॉमिस्ट दारियो कैल्डारा एंड मैथेओ लैकोविलो। तो ये दो मिलके इसका, इस इंडेक्स को बना रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट मेजर टू मॉनिटर द जियोपॉलिटिकल रिस्क।
बट इस मॉडल में मैं बस एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस इंडेक्स को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है. वन इज द थ्रेट्स विच आर मोर वर्बल, वेरी कॉमन, एंड वन इज द इंडेक्स एक्ट्स. During the World War 1920-1940, the acts were stronger than geopolitical, what we call saber rattling, मुंह से थ्रेड देना. दैट पीरियड से एक्शन ज्यादा था, मतलब छुप छुप के एक्शन बढ़ा हुआ था, rather than announcing कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा करें, we can do this and that. But after the World War II, what we saw during Cold War era, कि except for the Khrushchev period, जहाँ पे more direct actions, Cuba involvements were there, Vietnam actions were there were more verbal threats, verbal saber rattling than actions. Things started changing since 2000, 2002 major happening. US attacked Iraq and China joined World Trade Organization. One side globalization, one side global war as well. तो इसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स में जो थ्रेट है, द वर्बल थ्रेट अगर हटा ले, this time the acts are going up. The acts are actually, देखा जाए तो starting to surpass ये जो वर्बल थ्रेट है. जैसे इजराइल के ऊपर अटैक वाज a pre-planned but a very silently carried out attack. There were no major threats announced. These Houthi rebels attacks, they were all of also very sudden, not there were major announcement of this risk threats. सो तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है, आई थिंक ये जो डिकेड है हम लोग घुस चुके हैं 1920 टू 1930 एंड 19 सॉरी 2022 20 टू 2030 and 2030 to 40 has similar characteristics to 1920 to 1930 and 1930 to 1940 in terms of geopolitics. तो ये एक चीज है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, विच कैन फाइनली कंट्रीब्यूट टू वन ऑफ द ट्रेंड, जो जरूर बात किया जाएगा इसके ऊपर. दैट इज, लेट्स गो टू द बॉन्ड्स. This is a very long term trend line has been broken in the US long term interest rate chart. These kind of geopolitical events, supply chain constraint, they can significantly add to the cost and to the inflation, which can contribute कि ये जो trend change हम लोग देखे हैं US long term interest rate में, वो trend change में further it can add to the pressure. और हम लोग एक ऐसी एरा में जा सकते हैं वेयर सच हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट hurts the overall equities or risk asset performance, which can downperform for a very long period of time, say 7 to 10 years. Let's hope that that's not the case. I hope वो तरफ हम लोग ना जाए, बट ऐसा जरूर एक थ्रेट तो डेफिनेटली है दिस टाइम अराउंड, जब कई सारे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आर अंडर थ्रेट. आप देखेंगे कि निकेई, जापान का निकेई इज अबाउट टू ब्रेक इट्स 40-year लॉन्ग टॉप. So several of the long-term trends are under threat, which means that we could be moving into a different era than previous one. The different era, as per me, broadly lasted started in 1980 and lasted for 40 years, and we are now going to beginning to see a new era of new financial era, where the cost of borrowing with the interest rate can significantly go up to compensate for the high inflation. So that's all from my side. I hope ये macro video आप लोगों को अच्छा लगे. ये this is a beautiful website I use. आप चाहो तो इसको subscribe भी कर सकते हो. They charge very minimal cost compared to what they give. They have AI tools, they have toolbox,
They have commitment of traders report. You can look at various market, analyze exchange traded funds. So all in all, I'm a very big fan of this website. So thank you so much for watching, and all the very best from my side.